Hello, very welcome to all of you. I'm Dr. Himanshu Mathur. On the behalf of Jaipur Rehab, I welcome you all here. Just a second, let me do a little settings of mine before we start all these stuff for today. Okay, great. We have a few people. Hi, good evening, everybody. Hello. I welcome you all here, and we'll have to wait for a few people who will be coming, who will be joining us very soon. I'm getting a few messages from people that they are joining soon. So yes, we are waiting. And I'm quite sure you people must be aware. You people must be prepared, well prepared about it. Okay. So all set, all ready, everybody? Shall we start? Okay, we've got people. Good one. Okay. चलिए जी शुरू करें. आज का कौन बनेगा करोड़पति? Okay. And here we go. Let me start sharing my screen. चलिए जी. So today is the last session of the RPSC paper solving, and छोटा सा introduction है फटाफट दे देता हूँ, रोज ही देता हूँ मैं. I'm Dr. Himanshu Mathur. I'm working as an assistant professor in the Department of Physiotherapy, Jaipur National University. I'm also working as a chief physiotherapist for My Physio and director and chief physiotherapist for Jaipur Rehab. So I welcome you all. And फटाफट से yes लिख दो और मैं शुरू कर दूंगा पहला क्वेश्चन. Are you ready for the first question? Come on, if you're ready, write yes. Okay, चलो पहले लिख दिया लोगों ने yes है, मेरे कहने से पहले लिख दिया. चलो, are you ready? Come on. Are you ready for the first question? First question for the last session of RPSC paper solving part 4. पता ही नहीं चला हम part 4 तक पहुंच गए. चलिए जी, मुझे काफी सारे yes मिल गए हैं. तो इसी yes के साथ here we go for the first question, and this is the first question. Come on. The lesion of whole brachial plexus, if located proximally, will show all of the following features. Number 1 is presence of Horner syndrome, paralysis of levator scapulae and serratus anterior, absence of axon reflex on histamine test suggesting one proximal to the posterior ganglion, or is it complete loss of function of the upper extremity? And your time starts now. जल्दी से. जब भी brachial plexus का lesion होगा proximally, सबसे proximally, तो वो क्या feature show करेगा? Presence of Horner syndrome, paralysis of levator scapulae and serratus anterior, absence of axonal reflex on the histamine test, and या फिर complete loss of function of the upper extremity. आहा, सभी लोग पढ़ के बैठे हैं आज तो. क्या बात है जी, क्या बात है. सभी लोग पढ़ के बैठे हैं. गुड वन, गुड. चलिए जल्दी. It seems that the question paper is quite easier. लेकिन मैं बता दूं आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ही misleading. Yes, it is proximal to the ganglion. Come on. Keep answering. Come on, keep answering. Chaliye ji. In that case, I'll start with the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. तो मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोगों में से जो भी जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 कहा है, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ऑप्शन नंबर 3 इज ऑल्सो वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस, राइट? इट इज नॉट अ रॉन्ग ऑप्शन, राइट? सो हिस्टामिन टेस्ट इज अ सिंपल वे टू इवैल्यूएट द रूट अवल्जन. अगर रूट अवल्ज आउट हुई है तो इट इज अ वेरी वैल्यूएबल टेस्ट. अपर रूट्स आर कॉमनली यूज्ड एज डोनर्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन. In some cases, a frequently used test cannot determine the site of the lesion. C5 is difficult to evaluate using sensitive conduction studies. The other conduction studies, including your NCV also, right?
The histamine test can be helpful in determining a C5 avulsion, right? तो इसमें सारे टेस्ट आ जाएंगे, मतलब सारे जितने भी सिंड्रोम्स है वो भी सब आ जाएंगे, एंड इंक्लूडिंग क्योंकि मेजर नर्व्स जो आपकी अपर लिम की हैं, दे विल बी इंजर्ड. So because of the injury of the major nerves, the whole arm will the function of the whole arm or the upper extremity will stop working, or we will be having complete loss. चलिए जी, गुड. आई एम क्वाइट हैप्पी कि आप सभी लोगों ने सही जवाब दिया इसका. और अब जो हम बारी आती है अब अगले सवाल की, तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2. Here we go for you people. Identify the current that can be given for 24 hours a day with minimal side effects and can relieve pain. Number 1, Faradic current. Number 2, Russian current. Number 3, dynamic current. Number 4, transcutaneous electrical nerve stimulation, यानी कि TENS. चलिए जी, स्टार्ट आंसरिंग. समय शुरू होता है अब. आंसर प्लीज आंसर कीजिए. You can answer me. Okay, I can see your answers. More. We want more answers. Come on. आ नहीं रहे जवाब. Okay. More people can answer. I am continuously looking at your answers. More. You can answer more. Chali ji, countdown starts here. Hi, Dr. Sonam. Good evening. Countdown starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Mostly लोगों ने आंसर दिया है आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट. सबसे पहले हम बात करेंगे फैराडिक करंट का पेन रिलीविंग में बहुत बड़ा रोल नहीं होता है एज कंपेयर टू दी अदर्स, राइट. तो और दूसरा पाउंडिंग सेंसेशन जैसे क्या कहना चाहिए सेंसेशंस होते हैं, तो इट्स नॉट अ कंफर्टेबल करंट टू बी व्हाट यू कैन से टू बियर. ओके, नेक्स्ट इज दी रशियन करंट का भी पेन रिलीफ में बहुत कम योगदान होता है, मसल स्ट्रेंथनिंग में बहुत अच्छा काम करता है और हाइपरट्रॉफी जनरेशन में बहुत अच्छा काम करता है. अनदर थिंग इज अगेन पाउंडिंग सेंसेशंस होते हैं, तो वी कैन नॉट गिव इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, राइट. अच्छा, दूसरा फैराडिक करंट में एक बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए कॉम्प्लिकेशन होता है एक्लेमेटाइजेशन का. ओके, so this is the reason why we cannot give Faraday current also. Dynamic current is a different type of current which has an unusual sensation. It's a painful stimulation. ठीक है ना, इसका जो फीलिंग होता है वो पेनफुल सा होता है. So this is the reason why we cannot give a dynamic current. On the contrary, transcutaneous electrical nerve stimulation के जो sensations होते हैं वो relatively better होते हैं, non painful होते हैं, and this can be given for longer time. Okay, maybe कई studies में लिखा है ऐसा that you can give it for 24 hours also, लेकिन 24 hours तो कई cases में मतलब हर case में indicated नहीं होता है. Okay, so option number 4, TENS, transcutaneous electrical nerve stimulation, is the correct answer. Now this takes me to question number 3 of the day. So question number 3, here we go. In an acute ankle sprain with the beginning of a swelling, which one of the following will not decrease swelling? Number 1 is ice massage. Number 2 is cryopressure. Number 3 is ice towel. Or number 4 is evaporative coolant. Number 1 is ice massage, cryopressure, ice towel, or evaporative coolant. Your answers, please. Come on. Okay, we are getting. क्या बात है, आज तो सब अच्छे से पढ़ाई करके आए हैं या फिर इसकी की पढ़ करके आए हो? Okay, good one. आसान सवाल है, तो we'll be starting with the countdown soon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
and 1. So most of you जिन्होंने भी option 4 अपना आंसर चुना है, they are correct. Evaporative coolant बहुत ही superficial स्प्रे होता है या सुपरफिशियल मोडालिटी होती है ऑफ एप्लीकेशन, तो हेमोडायनामिक चेंजेस करने में कैपेबल नहीं होता है ये. अदर देन दैट, जो आइस हम कंटिन्यूस लगा करके रखते हैं, चाहे वो आइस मसाज हो, क्रायो प्रेशर हो या आइस टॉवल हो, इट ब्रिंग्स अबाउट द हेमोडायनामिक चेंजेस व्हिच इवेंचुअली रिड्यूसेस द स्वेलिंग. ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, चलिए जी, दिस ब्रिंग्स मी टू क्वेश्चन नंबर 4. बड़ी जल्दी हम आगे बढ़ रहे हैं आज. मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग काफी कुछ चीजें पढ़ के आए हैं, तो मेरा काम इवेंचुअली कम हो जाता है अगर आप जब भी आप सही जवाब देते हैं तो. चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, हियर आई गो. Which of the following modalities will place chemical substance into the body with direct current to decrease inflammation? Is it ultrasound therapy, phonophoresis, iontophoresis या Faradic current? बहुत आसान सवाल है, प्रोबेबली अभी तक का सबसे आसान सवाल यही है. स्टार्ट आंसरिंग, यू कैन स्टार्ट आंसरिंग. ओके, पीपल हैव स्टार्टेड आंसरिंग. वेरी गुड, very good. More of you people can answer. More of you people can answer. Good one, good one. You can write your answers in the chat box. Good one. Okay, okay, I can see your answers. Come on, very good. All right, again बहुत आसान question है, so I'll be starting the countdown soon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. मैक्सिमम लोगों ने, मेरे ख्याल से सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 चुना है, और ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. राइट भाई, पहले फर्स्ट ऑप्शन और आखिरी ऑप्शन तो बनता ही नहीं, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन ऑफ केमिकल्स हम यूज ही नहीं करते, तो ये पहले कट गया. फोनोफोरेसिस इज गिवन विद अल्ट्रासाउंड, तो फैराडिक करंट की बात ही नहीं है यहाँ पे, कोई करंट की बात ही नहीं है, डायरेक्ट करंट की. तो डायरेक्ट करंट वाला ऑप्शन कौन सा बचा आपके पास? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज आयोंटोफोरेसिस. ओके, सो वेरी गुड. दिस ब्रिंग्स मी टू क्वेश्चन नंबर 5. हम बड़ी तेजी से क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 फॉर द डे, हियर इट कम्स. Out of the gaits listed, which one is the fastest in terms of speed? कौन सा गेट सबसे fastest gate है? Is it a 2-point gate? Is it a 4-point gate? Is it a swing 2 gate or a swing through gate? Is it a swing through gate, swing 2 gate, 4-point gate or 2-point gate? कौन सा गेट फास्टेस्ट है? कौन सा गेट फास्टेस्ट गेट है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन. अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. देयर आर पीपल हु आर आंसरिंग. वेरी गुड. इस बार थोड़ा सा मामला डगमगा गया है, और बहुत सारे डिफरेंट आंसर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं. सो दिस इज वेरी गुड. Okay, okay, okay. Very nice, very nice, very nice. Very nice. Few more seconds before I start the countdown. Keep answering, keep answering, keep answering. Okay, so here it comes, the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. So जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को अपना आंसर चुना है, लेट मी टेल यू, यू पीपल आर करेक्ट. ओके, बहुत सिंपल सा फंडा है, क्योंकि स्विंग थ्रू गेट में हम लोग क्रच लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन स्टेप इज ऑलवेज मोर. ठीक है, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज योर स्पीड और वेलोसिटी. सो इफ द डिस्टेंस इज मोर, स्पीड विल इवेंचुअली बी मोर. ठीक है, तो स्विंग टू गेट की स्पीड हमेशा, स्विंग थ्रू की जो स्पीड होती है हमेशा ज्यादा होती है. अगर ये ऑप्शन ना रहा होता यहाँ पे, तो इवेंचुअली मेरा जवाब होता 2-point गेट. ठीक है, क्योंकि 4-point गेट इज अ स्लो गेट. ओके, 2-point गेट इवेंचुअली इज अ स्टेबल गेट एंड इज अ फास्टर गेट. ओके, ऑन द कॉन्ट्ररी, स्विंग टू एंड स्विंग थ्रू जो दोनों गेट्स हैं, दे आर अनस्टेबल गेट्स.
हमें बैलेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है इन चीजों में, लेकिन फिर भी स्विंग थ्रू इन ऑप्शंस में से अगर मैं देखूं तो स्विंग थ्रू गेट जो है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तो आप लोगों में से जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 4 को अपना आंसर चुना, यू पीपल आर करेक्ट। ओके, चलिए, दिस ब्रिंग्स मी टू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द डे, एंड हियर इट कम्स। While testing for muscle strength for hip abductors and adductors, you observe that the patient can perform full range of motion in supine position, but not in sideline position. You will grade the strength as grade 3, grade 2, grade 4 और grade 1. फिर से एक आसान सवाल, फिर से एक आसान सवाल, बहुत आसान सवाल है. You people can start answering. You people can start answering. Come on, come on, come on. I can see your answers. Come on. Write your answers in the comment box fast. Write your answers in the comment box fast. Okay, okay. More answers can be written here. More answers can be written here. More answers can be written here. Okay, आसान सवाल है इसलिए मैं शुरू कर रहा हूं काउंटडाउन को. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. मैक्सिमम लोगों ने जो आंसर दिया है वो है आंसर 2, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ग्रेड 2. और मैं बता दूं ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्या कुछ लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 भी दिया है? मैं बता दूं ऑप्शन नंबर 1 ग्रेड 3 होता है, एंड ग्रेड 3 इज फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी. ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ग्रेड 2 होता है फुल रेंज ऑफ मोशन विद ग्रेविटी काउंटर बैलेंस्ड. ओके, तो अगर मैं अबडक्शन एडक्शन को सुपाइन पोजीशन में कर रहा हूं तो इट इज बीइंग डन इन ग्रेविटी काउंटर बैलेंस्ड. और अगर मैं अबडक्शन को या एडक्शन को साइड लाइन में जाकर के करूंगा तो इट विल बी अगेंस्ट ग्रेविटी. ओके, तो अगेंस्ट ग्रेविटी इज ग्रेड 3, दैट इज फुल रेंज ऑफ grade 3. So it is not being done in sideline or against gravity. So it is option number 2. So option number 2 is the correct answer for you people. Right? चलिए, मजा आ रहा है मुझे भी आज. You people are so well prepared today. चलिए, this brings me to question number 7 of the day, and here we go. Identify the technique used in cerebellar lesion. Identify the technique used in cerebellar lesion. Okay, Brunstone method, timing for emphasis, is it Bobath approach, or all of the above? Is it Brunstone's method? Is it timing for emphasis? Is it Bobath approach, or is it all of the above? Okay, I've started receiving answers. I've started receiving answers. Okay, okay, okay. There are people who are answering. Come on, come on, come on. Ready with your answers. Okay, chaliye. This calls for a countdown now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. So जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है, मैं बता दूं, यू पीपल आर करेक्ट. अब ऑप्शन नंबर 4 कैसे, ये देखिए कैसे. सो ब्रूनस्टॉर्म मेथड ऑलवेज वर्क. सी, सेरिबेलर लेजन की बात करता हूं तो सेरिबेलर, चलिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया की लिंक बताता हूं, निमोनिक बताता हूं सेरिबेलम के डिस्फंक्शन याद करने के लिए. राइट, इट इज निमोनिक है वैनिश डीडीटी. ओके, ये मैंने तब पढ़ा था जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था. ओके, सो दिस इज वर्टाइगो, एटेक्सिया, निस्टैग्मस, intentional tremor, scanning speech, hypotonia,
dysdiadokinesia, dystonia and titubation. So इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज हाइपोटोनिया. ठीक है ना, मतलब रिड्यूस टोन. रिड्यूस टोन का मतलब है मसल्स आर गेटिंग वीकेंड. तो मसल्स जब वीक होती हैं तब भी ब्रूनस्टोन और बोबाथ अप्रोचेस काम करती हैं. ओके कैसे? when no motion exists, movement is facilitated using reflexes, associated reactions, proprioceptive facilitation and or extroceptive facilitation to develop muscle tension in preparation for voluntary movement. Okay, so this is also helpful in development of muscle tone and muscle strength. Now this is another technique, timing for emphasis. It is a technique of PNF. Okay, so it means that certain muscles which are weak are emphasized by allowing other strong muscles to contract maximally against resistance, that is isometric contraction, while allowing movement to occur only at the joint upon which weak muscles act. Okay, so the movement may be allowed from proximal to distal. Same goes with your Bobath approach also. Motor control and its production refers to two systems of output: the open loop, that is the voluntary control, and the closed loop, that is the postural control mechanism. So it induces more motor control, right? So ये तीनों ही option सही हैं, तो इसलिए option number 4, that is all of the above, will be the correct option for us, right? Very good. जिन जिन लोगों ने option 4 को चुना, you people are very right. Okay, now this takes me to the question number 8 for the day. And question number 8, here it goes. Which one of the following spinal muscle atrophy has an age of onset before or shortly after birth and life expectancy not past 2 years? Is it Kugelberg's Wallander spinal atrophy? Is it Werdening-Hoffmann spinal atrophy? Or is it SMA type 2 or SMA type 4? चलिए जी जवाब दीजिए. Mnemonic is already there. जब वीडियो फिनिश होगा तो आप वापस जाकर के देख सकते हो उसको. Okay, it is vanished DDD. Right now you can answer for this. अब फंस गए हम लोग, है ना? आंसर दीजिए, आंसर. Please keep answering. Please keep answering for this. I cannot see too much answers here. Please keep answering. Please keep answering. I cannot see your answers. Then it's okay. अगर नहीं आता है तो मैं अभी बताता हूँ, छोड़ दो क्वेश्चन को. It's better to leave the question rather than getting a -1. Okay. Good one. Good one. I can see people answering here. Good one. Okay. 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 चलिए जी, क्योंकि काफी सारे लोगों के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया ये, तो आई विल बी टेकिंग इट फॉर द काउंटडाउन. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's totally okay to be confused. That's okay. अगर आप लोगों को एग्जाम में जाकर के लगता है if you're getting confused with some question, तो don't stay on that question, क्योंकि अगर आप stay करोगे इस question पे तो आगे के लिए टाइम भी वेस्ट होगा और कंफ्यूजन भी बढ़ता जाएगा वो. ठीक है ना? Okay, Reena Sharma, you are right. Okay, SMA type 1 is Werdening-Hoffmann type, and it is the correct option. Okay, SMA type 1. Okay, it is of type 3. It is of 3 types and it's there in children. 3 types में 3 basic features बताए हमने उनके. That is, it is an autosomal recessive which is caused by gene defect in the gene SMN1. And its onset is 6 months and life at the age of 6 months, and the life expectancy is less than 2 years. It has element type signs and death is because of respiratory failure. So Werdening-Hoffmann, that is SMA type 1, is the correct answer.
राइट. सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. आप लोगों में से जिन्होंने भी सेकंड ऑप्शन चूज किया था, दे आर ऑल करेक्ट. गुड वन. चलिए जी, this brings me to option the question number 9 for the day. And question number 9, here I go. Excessive tone in the limbs resistant to active and passive motion is termed as hypotonia, hypertonia, flaccidity, or rigidity. चलिए, is it hypotonia, hypertonia, flaccidity, or rigidity? चलिए जी, start answering. Start answering. Start answering. Start answering. Excessive tone. मैं एक चीज बता दूं कि आज के काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मिसलीडिंग हो सकते हैं, राइट. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने कल भी बात की थी, डोंट ऑलवेज रिलाई ऑन द आंसर्स व्हिच हैज बीन गिवन इन द की. ओके, क्योंकि की में कई सारे ऐसे ऑप्शंस लिखे हैं, आंसर्स लिखे हैं जो कि सही नहीं है. ठीक है ना. अगर जो पिछला क्वेश्चन भी देखो जो हमने बात कर रहे थे, उसका भी शायद आंसर 4 लिख रखा था की में, विच इज नॉट राइट. ओके, मैंने आज, मुझे पहली बार आज की देखने मिली यहाँ पे, और फिर मैंने देखा कि की में कई सारे एम्बिग्यूटीज हैं. ठीक है, चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. चलिए जी, सबसे पहले तो एक्सेसिव टोन, अब जब इन्होंने लिखा है मतलब बड़ी हुई टोन है, तो मैं ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 को तो पहले ही हटा देता हूं अपनी जगह से. ठीक है ना, ये दोनों तो पक्का नहीं है. अब ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है, ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है. ऑप्शन नंबर 2, हाइपोटोनिया, इज यूजुअली इन केसेस ऑफ स्पैस्टिसिटी. ओके, अब स्पैस्टिसिटी और रिजिडिटी में एक बहुत बेसिक डिफरेंस क्या होता है. रिजिडिटी इज इन बोथ एंटागोनिस्ट एंड एगोनिस्ट ग्रुप ऑफ मसल्स, एंड स्पैस्टिसिटी इज यूजुअली इन एंटागोनिस्टिक टाइप मसल, राइट. And another thing is, spasticity is exaggerated when you start giving a passive stretch. तो तभी catch जैसा feel होने लगता है. That is something, what you call it as, spasticity, right? So spasticity is mostly exaggerated whenever you give a passive stretch or a passive movement. Okay. On the contrary, rigidity is present in both active and passive motions. Okay. So because of this, option number 4, yes, of course. Also, it is velocity dependent. So option number 4 is the correct answer. Okay, rigidity is the correct answer of this question. Okay, so always go for logics, do not go for the key. All right, chaliye. This brings me to question number 10 of the day. Question number 10, here it comes. An incomplete injury to the spinal cord with the paralysis and loss of sensation except in the sacral region is termed as, is it a cauda equina injury, is it a sacral sparing, is it a central cord syndrome, or it is a brown sequard syndrome? चलिए जी, शुरू कीजिए. Waiting for your answers. Start answering. Come on. Come on. Okay, I'm getting answers. Very good. Please keep writing answers. Please keep writing answers. Okay, this calls for a countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. बहुत सारे मिले जुले से आंसर्स थे, और मैं बता देना चाहता हूं जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को अपना आंसर चुना है, दे आर करेक्ट.
क्योंकि जितने भी बाकी सारे ऑप्शंस हैं, एक तो उसमें यूनानिमस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, ठीक है ना, दूसरा दे आर इनकम्प्लीट इंजरीज, तो यूनिलैटरल सिम्टम्स ज्यादा आते हैं, बायलैटरल सिम्टम्स का आना जरूरी नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में बायलैटरल यूनिलैटरल सिम्टम जैसी कोई बात नहीं लिखी है। ऑल्दो इसमें अगर मैं सैक्रल स्पेयरिंग या फिर ये सोचूं कि पूरा सैक्रम स्पेयर रहना चाहिए, तो मैं मेरे लिए शायद चारों ऑप्शंस गलत हैं, लेकिन अगर इफ आई गो फॉर मोर करेक्ट ऑप्शंस, तो इन दिस केस S4 एंड S5 आर रिमेन्ड, ठीक है ना, जो स्पेयर रह जाते हैं दे आर S4 एंड S5 which eventually lead to intact sensations in the anal region, right? This is the reason why option number 2, that is the sacral sparing, is the correct answer. Okay, sacral sparing is the correct answer for this question number 10. So all of you people जिन्होंने option number 2 को अपना आंसर चुना, they are correct. Okay, now this brings me to question number 11 for the day. Question number 11 for the day. Here we go. In normal milestone development, a 9-month-old child will be able to stand and walk holding a furniture, sit alone and crawl, stand and walk unaided, or sit on the chair. Please start writing your answers. Please start writing your answers right here. Please start writing your answers here. Okay, we have started getting answers. Good one, good one. Please keep answering. Please keep answering. Okay, this calls for a countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे लिखा है, मैं बता दूं, यू पीपल आर रॉन्ग. ओके, क्योंकि स्टैंड एंड वॉक अनरेडेड जो है, मतलब बिना किसी सपोर्ट के स्टैंडिंग वो नहीं कर पाता है, राइट? मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ग्रॉस डेवलपमेंट. ओके, सो अ 9-month पर्सन और चाइल्ड कैन स्टैंड विद सपोर्ट. ओके, अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में वॉक नहीं लिखा होता तो शायद मैं ऑप्शन नंबर 1 को करेक्ट करता, लेकिन चूंकि यहाँ वॉक लिखा है इसलिए ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो गया. सिटिंग ऑन द चेयर, सिटिंग जो है वो बहुत पहले से शुरू हो जाती है उसकी. ओके, सिटिंग विद सपोर्ट भी शुरू हो जाती है. एंड ऑल्दो यहाँ पे लिखा है इट क्रीप्स वेल एट 12 months, बट इट स्टार्ट्स, द child starts creeping at or starts crawling at the age of 9 months. Okay, so the more correct option which comes here is the option number 2. ठीक है, क्योंकि इससे exceed कर चुका है वो, लेकिन यहां तक अभी नहीं पहुंचा है. ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 तक वो नहीं पहुंचा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 से exceed कर चुका है वो, right? So a 9-month-old child will be able to sit alone and crawl. So option number 2 जिन लोगों ने भी लिखा है, option number 2 is the correct answer. Okay, चलिए जी, this brings me to question number 12 for the day. And question number 12 for the day, here we go. A 79-year-old patient exhibits impaired balance. The management program for this patient can approximately include all of the following except, मतलब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन आप इंक्लूड नहीं करेंगे. ओके, which will not be a treatment option for you. Okay, option number 1, stability, re-education, postural sway training. Option number 2, sit to stand to sit activity training. Option number 3, practice in maintenance of a wide base of support during gait and turns. Fourth is a tandem walking and a single stance. चलिए जी, ओके, आप लोगों ने जवाब देना शुरू भी कर दिया है. वेरी गुड, आई कैन सी योर आंसर्स. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड.
कीप आंसरिंग। इस स्पीड से देते जाओगे तो मैं फटाफट से काउंटडाउन शुरू कर दूंगा। चलिए जी, few seconds before I start the countdown. Few seconds before I start the countdown. Good one. Very good. So, I'm so happy to say that I am starting the countdown. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. मैक्सिमम लोगों ने जो ऑप्शन चूज किया है वो है ऑप्शन नंबर 4, एंड आई एम सो हैप्पी टू टेल यू दैट ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सही लिखा है जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में लिखा है। 79 ईयर ओल्ड एल्डरली जेरियाट्रिक पॉपुलेशन के पेशेंट हैं, ऑलरेडी बैलेंस इम्पेयर्ड है। You will never ask the patient to stand in tandem walking, or you'll never ask to go for tandem walking, and especially single leg balance आप कभी नहीं कराएंगे उनके लिए। ओके, other than that सारी चीजें जो तीनों ऑप्शन है you will ask the patient to do. It is the tandem walking and single stance जो है वो आप नहीं कराएंगे because it induces the risk of fall. Okay, so you will not do anything that increases the risk of fall. Okay, so option number 4 is a correct option for you people. Okay, so good, your people are going so very good. Okay, now this brings me to question number 13 of the day, and here we go. Easiest, neuropraxia of a nerve will regenerate in 6 to 8 months. Nerve dysfunction will be rapidly reversed generally in 2 to 3 weeks. Regeneration is likely after 2 to 2.5 years. या फिर regeneration is unlikely because surgical approximation of the nerve ends was not performed. चलिए जी, keep answering, start answering. कौन सा ऑप्शन सही है? न्यूरोप्रैक्सिया के बारे में क्या सही है इन सब में से? क्या वो 6 से 8 महीने में रीजनरेट हो जाता है? क्या रैपिडली रिवर्स हो जाता है 2 से 3 हफ्तों के बीच में? रीजनरेशन क्या 2 से 2.5 साल लेते हैं? या फिर जब तक कि ऑपरेटिव मेजर ना लिया जाए देयर विल बी नो रीजनरेशन? ओके, आई कैन सी अ लॉट ऑफ आंसर्स। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा फॉर योर काउंटडाउन टू स्टार्ट। चलिए जी, आंसर्स मुझे बहुत स्पीड से मिल रहे हैं, तो इन स्पीड से मिलते हुए आंसर्स के लिए मैं कहूंगा that I'm starting the countdown. So the countdown starts with 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. मेरे ख्याल से सभी लोगों ने एक ही जवाब दिया है, that is the option number 2. So option number 2 is correct क्योंकि there is no anatomical injury which has occurred in neuropraxia. It is just a compression which can get usually reversed कई बार तो if it is not that followed by trauma तो immediately ही हो जाता है, लेकिन if it has been followed by trauma it rapidly get reversed generally in 2 to 3 weeks. Okay, so option number 2 जिन लोगों ने लिखा है it is correct answer. Okay, option number 2 is the right answer for everybody. Great going. So this brings me to question number 14 for the day. Question number 14 for the day. Here we go. Here it is. During initial standing, a patient is pushing backwards, displacing the center of mass at it or near the posterior limits of stability. The most likely cause of this is contraction of the option number 1, tibialis anterior and peroneals. Option number 2, hamstrings. Option number 3, gastrocnemius soleus. Option number 4, hip extensors. And your time starts now. चलिए जी, एक पेशेंट खड़ा है और वो बैकवर्ड पुशिंग की वजह से डिस्प्लेस हो रहा है, अपनी जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है उसको पीछे डिस्प्लेस कर रहा है, या सेंटर ऑफ मास उसको पीछे डिस्प्लेस कर रहा है टुवर्ड्स द पोस्टीरियर लिमिट्स ऑफ द स्टेबिलिटी। तो किस मसल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण ऐसा हो सकता है? ऑलवेज रिमेंबर, चलो मैं एक्सप्लेनेशन के टाइम बताऊंगा क्या ऑलवेज रिमेंबर है। चलिए जी, आंसर्स
आंसर्स नहीं आ रहे, क्या हो गया? आंसर्स नहीं आ रहे, आई एम नॉट गेटिंग आंसर्स. कम ऑन प्लीज राइट आंसर्स, प्लीज राइट आंसर्स. मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा इंटरनेट तो नहीं रुक गया है. नहीं, मेरा इंटरनेट तो नहीं रुका है, आंसर्स ही नहीं आ रहे, आंसर्स ही नहीं आ रहे. कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन. ओके, राइट इट फास्ट, राइट इट फास्ट. सोच लो, चलो थोड़ा सा और सोच लो. आई गिव यू टाइम टू थिंक, आई विल गिव यू टाइम टू थिंक, डोंट वरी. सोचो सोचो सोचो, चलो 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 चलो. Come on, come on, come on. All right, now I'll be starting with the countdown. So, countdown, here it starts. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ओके, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है, चलिए मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं. पहली लाइन में क्या लिखा है इन्होंने? ड्यूरिंग इनिशियल स्टैंडिंग. ऑलवेज रिमेंबर इट इज इनिशियल स्टैंडिंग एंड द फीट आर प्लांटेड. ये जो फीट हैं दे आर प्लांटेड. आगे की जो मसल्स हैं दे आर टिबियालिस एंटीरियर. पीछे की जो मसल्स है वो है गैस्ट्रोक्सोलियस. ठीक है, तो अगर फीट प्लांटेड है, ये नहीं हिल रहा है अपनी जगह से, सो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स विल पुल द बॉडी फॉरवर्ड. एंड अगर ये प्लांटेड है और मेरी प्लांटर फ्लेक्सस वर्क कर रही हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स विल पुल द बॉडी बैकवर्ड. ओके, सो it is always the contraction of the gastrosoleus muscle by which the body is pulled backward or pushed backward. Okay, so हमारे पास एक reason भी है that the muscles of the foot and ankle move as a long lever of the body. Move the body as a long lever and they move it forward and backwards as in the ankle strategy. So the gastrocnemius soleus moves the body backward and tibialis anterior moves the body forward, जो मैंने आप लोगों को बताया. Okay, so gastrosoleus, option number 3 is the correct answer with this. Right, now this brings me towards the question number 15 for the day. And question number 15, here we go. The sensory examination of the patient shows a dull aching pain, but he is not able to discriminate a stimulus as sharp or dull. 2-point discrimination is absent. Based on these findings, the pathway that is intact is the anterior spinothalamic tract, lateral spinothalamic tract, neospinothalamic tract और medial lemniscus. चलिए जी शुरू हो जाइए, चलिए जी शुरू 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 शुरू. Come on, come on, come on, come on. Answers, answers, answers. I'm waiting for your answers. Okay, okay, I've started getting answers. Good one, good one. I'm getting answers. Good one, good one. Okay, okay. I'm getting answers. Good one. Good one, good one. Okay, so this calls me for a countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. मैं एक चीज बता दूं, चलो पहले आप लोगों को आंसर समझो. पहले क्वेश्चन समझाता हूं मैं आप लोगों को. भाई एक पेशेंट है जिसका कि आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ठीक है ना. पेशेंट को डल और एकिंग पेन हो रहा है, लेकिन उसको जगह नहीं पता कहां हो रहा है, एग्जैक्टली लोकलाइज नहीं कर पा रहा है वो. ठीक है, पेन शार्प है या डल है वो भी वो नहीं बता पा रहा है. पेशेंट को और एक प्रॉब्लम है, वो है 2-point डिस्क्रिमिनेशन. वो भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है वो इंसान.
ठीक है ना। तो इन दिस केस हमारे पास क्या क्या कंडीशंस है, इधर वन इज पेन, द अदर वन इज 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। अब इनमें से कौन कौन से ऐसे वो हैं क्या नाम है पाथवेज जो कि पेन कैरी करते हैं, लेटरल स्पाइन थैलेमिक भी करता है, मीडियल लेमिनिस्कस भी करता है। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, अच्छा पेन को नियोथैलेमिक नियो स्पाइन थैलेमिक ट्रैक्ट भी करता है, और मीडियल लेमिनिस्कस ऑलवेज आल्सो कैरी 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। बचा क्या, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट विच कैरीज क्रूड टच एंड प्रेशर सेंसेशन, राइट। अब मैं बताऊं जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया है, वो ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों ने की में देख देख के किया है, और वो की में देख करके ऑप्शन नंबर 2 गलत है, ठीक है ना। दैट आंसर इज रॉन्ग because lateral spinothalamic tract carries pain and temperature sensations. Okay, so in that case option number 1 जिन लोगों ने किया है, option number 1 is the correct answer. Okay, so I'll tell you this way. Medial lemniscus, the primary function of the medial lemniscus is as a second order neuron of the dorsal column medial lemniscus pathway, is to transport sensory spinothalamic information to the conscious proprioception, vibrations, fine touch, and 2 point discrimination of the skin. Neospinothalamic tract, it conducts fast pain and provides information of the exact location of the noxious stimulus. Okay, although यहाँ पे exact नहीं था. Lateral spinothalamic tract transmits both pain and temperature information. तो इसका मतलब पेन भी आ गया हमारा, ठीक है. Anterior spinothalamic tract transmits crude touch and pressure. तो पेशेंट को क्रूड टच और प्रेशर का इनहिबिशन नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, चलिए जी. नाउ दिस कॉल्स मी फॉर क्वेश्चन नंबर 16 फॉर द डे, एंड हियर वी गो. Now you are studying various types of arthritis, especially rheumatoid arthritis versus osteoarthritis. Which of the following would best describe the etiology of osteoarthritis? Option number 1, trauma to a joint recently. Second, underweight. Option number 3, degeneration caused by aging. Or option number 4, recent injury to the joint. Chali ji. Okay. You people have started answering. I can see that. Good one, good one, good one. Good one. Good one. Good one. Okay. Good one. Okay. Good one. Good one. Chali, this calls for a countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है अगर मैं ये कहूं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस इज द inflammatory degeneration which is caused by aging. So that is totally correct. Option number 3 is the correct option when I have to describe osteoarthritis amongst these options. Okay, chaliye. This brings me to question number 17 for the day. Question number 17, here we go. The client has been positioned on side lying. You would anticipate that which of the following areas would be pressure point in this position. Okay, किस जगह पे प्रेशर पॉइंट होगा साइड लाइन में? सेक्रम, ऑक्सिपिट, एंकल्स और हील्स. सेक्रम, ऑक्सिपिट, एंकल्स एंड हील्स. चलिए जी, स्टार्ट आंसरिंग. Go, go, go. Go, Corona, go. Come on, come on, जल्दी 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 जल्दी. आसान सवाल है, आसान सवाल है. जल्दी करो. I'll be starting with the countdown. Okay, I'll be starting with the countdown. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए, अगर मैं सुपाइन पोजीशन में लेटता हूं तो सुपाइन पोजीशन में अगर मैं लेट रहा हूं तो द प्रेशर पॉइंट्स वुड बी sacrum, of course, sacrum, occiput, of course, occiput, heels, of course, heels। ठीक है, तो अगर ये तीन सुपाइन में होंगे लेकिन हमारी पोजीशन तो साइड लाइन है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो तीन कट गए, इसलिए एंकल राइट है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर एंकल की जगह मेलियोलस होता तो शायद ज्यादा अच्छा लगता मुझे। ठीक है ना, so if they are depicting malleolus with ankles, so ankle is the correct option for this answer, right? So this was a question जहां पे हमको eliminate करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चूंकि बाकी तीन ऑप्शंस नहीं होंगे इसलिए थर्ड ऑप्शन एंकल करेक्ट ऑप्शन है। अदरवाइज टू बी ऑन अ बेटर नोट, अगर वो मेलियोलस लिखते तो शायद ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आता या फिर हम ज्यादा जस्टिफाई कर पाते। चलिए, जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर 3 लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू क्वेश्चन नंबर 18 फॉर द डे। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, हियर वी गो। On the patient described above, you would decide to measure normal expansion। मतलब पिछला वाला 17 क्वेश्चन वाला पेशेंट है। ठीक है, now you would decide to measure normal expansion of the xiphoid process। okay, of the नहीं होना चाहिए, at the xiphoid process होगा। ठीक है ना, normal expansion at the xiphoid process। which of the following would be the normal value of expansion when measures of the xiphoid process। okay, जब भी मैं xiphoid process से measure करता हूं तो मेरा चेस्ट का एक्सपेंशन कितना होगा, नॉर्मल वैल्यू क्या है? इज इट 5 to 10 सेंटीमीटर्स, 5 to 10 inches, 0.5 to 1 centimeters or 0.5 to 1 inches? चलिए, टाइम स्टार्ट्स नाउ, गो 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 गो, जल्दी जल्दी जल्दी, आसान सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। Okay, I'm straight away starting with the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, अगर पहले कहीं और भी पूछा जाए तो देयर आर 3 लेवल्स जहां से हम चेस्ट का एक्सपेंशन मेजर करते हैं। वन इज एक्सिलरी लेवल, द अदर वन इज निपल लेवल, द थर्ड वन इज xiphoid लेवल। तो xiphoid लेवल से अगर हमें पूछा गया है तो नॉर्मल वैल्यू या नॉर्मल रेंज जो होती है, इट लाइज बिटवीन 5 to 8 सेंटीमीटर्स, राइट? सो 5 to 8 सेंटीमीटर में लाई करने वाला ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर 1 को चूज किया है एज देयर आंसर, so they are correct। Okay, so you can see it here। So in a fit young man, the chest may expand greater than 5 centimeters। It could be between 5 to 8 centimeters। Okay, chaliye, this brings me to question number 19 of the day। Question number 19, here we go। In determining to target heart rate for a 62-year-old male or 62-year-old patient, you would use the calculation for maximum heart rate। Which of the following best describes the calculation for maximum heart rate? Maximum heart rate की calculation करने के लिए how we can do it? चलिए जी, जल्दी शुरू हो जाइए। Pulse rate for 60 seconds, count pulse for 15 seconds multiplied by 4 plus age, और 220 प्लस एज या फिर 220 माइनस एज। चलिए जी, आंसर्स आने लग गए हैं बहुत सारे। ओके 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 ओके, जल्दी से कर दीजिए, इजी क्वेश्चन है। आई विल बी राइटिंग इट अगेन, आई विल बी स्टार्टिंग विद द क्या कहना चाहिए उसको, काउंट डाउन वेरी सून। 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. मैक्सिमम लोगों ने आप लोगों में से ऑप्शन चूज किया है ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, MHR is equals to 220 minus age. Okay, now this MHR is now फिर यूज किया जाता है in Karvinen's formula to calculate THR, that is target heart rate. All right, so this is the correct option. Okay. चलिए जी, सो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर 4 यूज किया है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. राइट, नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू क्वेश्चन नंबर 20. बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसलिए बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इस चीज में. ओके, क्वेश्चन नंबर 20, हियर इट गोज फॉर यू. A patient is referred to physical therapy several months status post hip burn. The patient report that he had an allograft over the burn area. Which of the following this describes? इसका मतलब है allograft का मतलब क्या होता है? A graft skin is from the same species. The graft skin is from the same individual. The graft skin is from an animal, or a surgical incision in the form of the letter Z, the length of the graft. Okay, answer. Start answering. चलिए, start answering. Very good. I've started getting answers. Good one. Keep answering. Good one. Good one. Keep answering. Keep answering. Keep answering. आसान सवाल है, बहुत ज्यादा समय लगना ही नहीं चाहिए. चलिए जी, I'm starting with the countdown. So 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. चलिए, मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को अपना आंसर चुना है. तो मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने आंसर चुना है, ऑप्शन नंबर 2 इज द रॉन्ग आंसर. ओके, द स्किन ग्राफ्ट taken from the same individual is the autograft. Okay, it's not the allograft. Okay, you're right. Okay, and the graft of the skin from the same species is the allograft. Okay, so the transplant of an organ or tissue from one individual to the another of the same species with different genotype. All right, so the option number 1, जिन लोगों ने option number 1 लिखा, option number 1 is the correct answer for this. All right, चलिए, now this brings me to question number 21 for the day, and here we go. For a periarthritis shoulder, which of the following would you implement? Isokinetic rehabilitation, PNF movement, shoulder wheel, dressing and undressing activities. चलिए जी, जल्दी से शुरू कर दीजिए लिखना आंसर. I can see your answers. Start writing. Periarthritis shoulder condition में हम लोग क्या implement करेंगे? Isokinetic rehabilitation, PNF movement, shoulder wheel, या फिर ड्रेसिंग एंड अनड्रेसिंग एक्टिविटीज. चलिए जी, ओके, वी हैव स्टार्टेड गेटिंग आंसर्स. चलो 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 जल्दी से, यू कैन राइट आंसर्स. Good one, good one. I can see your answers. Very good, very good. Good one. Good one. I can see your answer. Jaldi, jaldi, jaldi. Okay. Now I'm starting with the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2 and 1. चलिए, जिन लोगों ने बहुत सारे आंसर्स लिखे हैं और जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 लिखा है, option number 3 is the correct answer, because the primary goal in periarthritis shoulder is to increase the range of motion, right? Shoulder wheel की मदद से हम circumduction अगर कर पा रहे हैं तो it eventually increases the range of motion in all the 3 planes. Although जिन लोगों ने PNF या ड्रेसिंग अनड्रेसिंग एक्टिविटीज लिखा है, मैं उनको भी गलत नहीं कहूंगा, लेकिन दे कैन बी पार्ट ऑफ आवर सेकेंडरी गोल्स, राइट? Although isokinetic rehabilitation भी गलत नहीं है, क्योंकि it increases the eventually strength of particular group of muscles, ठीक है ना? तो ऑप्शंस सभी सही हैं, but based upon our primary goal, the shoulder wheel usage is the correct answer. तो जिन भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चूज किया है, ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer, right? अब हम लोग लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं, लास्ट सेशन ऑफ द आरपीएससी पेपर सॉल्विंग सेशंस, पेपर सॉल्विंग क्लासेस का लास्ट सेशन, लास्ट पार्ट, लास्ट सेगमेंट. ओके, क्वेश्चन नंबर 22, here we go. Amyotrophic lateral sclerosis lesion shows the signs and symptoms of lower motor neuron type, upper motor neuron type, upper and lower motor neuron type या फिर cerebellar type. चलिए जी, start writing your answers. Start writing your answers. I can see your answers right here. Start writing your answers. Lot of people have started writing. Lot of people have started writing. Lot of people have started writing. Good one. Lot of people have started writing. Good one, good one. Okay, straightforward question है, इसलिए I think मुझे countdown शुरू कर देना चाहिए. Good one. In a few moments, I'll be starting the countdown. चलो. चलिए जी, countdown starts with 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. बिल्कुल सही बात है. It is a type of motor neuron disease and it shows both upper and lower motor neuron type signs and symptoms. So जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 चूज किया है, ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer. Okay, so in ALS both upper motor neuron and lower motor neuron degeneration or die, and मतलब neurons degenerate भी होते हैं और die भी होते हैं, and stop sending messages to the muscles, unable to function. The muscles gradually weaken and starts to twitch. That's called fasciculation, and waste away. That is atrophy. Okay. Eventually, the brain loses its ability to initiate and control the voluntary movement. So, option number 3, that is both upper and lower motor neuron type signs and symptoms, is correct answer, right? Now, this brings me to question number 23. And here we go. You are treating a case of psoriasis with E3 dose of ultraviolet therapy. What is the frequency of the treatment? Is it daily, twice a day, alternate day, or once weekly? Is it daily, twice a day, alternate day, or once weekly? चलिए जी, बताइए. Start answering. I can see your answers in the comment box. Fast, fast, fast. You can start it fast. Faster you can go. Okay, okay, okay. Okay, people have started answering. People have started answering. Good one, good one, good one. It is a little tricky, so you can take a little time of yours.
Okay, good one. Okay, no problem. नहीं आता है तो it's better to leave rather than गलत जवाब देके अपना नुकसान करा लेना. Good one. Good one. Good one. Good one. Good one. चलिए जी, this calls for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. सो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3, जिन लोगों ने कहा है ऑल्टरनेट डे, लेट मी टेल यू, यू पीपल हैव आंसर्ड इट रॉन्ग. ओके, option number 4 is the correct option, that is once weekly. Okay, so if you have to see the frequency of UVR dosage, a subarrhythmal dose may be given daily, that is E0. E1 may be given on alternate days. E2 should be given twice a week. E3 should be given 2 weeks apart. That is, alternatively, you can give that. Okay, this is the reason why I've written that once weekly. Okay, once weekly would be the correct option for this. E4, only very local areas, not frequently given. So for question number 23, once weekly E3 dosage of ultraviolet therapy will be the correct option. Option number 4. Okay, great to see the involvement of you people. Now this brings me to question number 24 of the day. That is the second last question of the day. Chali ji, here it goes. A patient is a 5-day post MI, that is myocardial infarction, and is receiving cardiac rehabilitation. All of the following goals are appropriate except to initiate early return to independence in activities of daily life, educate the patient and family regarding the risk of the education, increase the patient's maximal oxygen consumption by discharge, counteract deconditioning associated with bed level. मतलब इन सब में से कौन सा गोल, सारे ही गोल्स हैं लेकिन एक गोल नहीं है, वो क्या है? एक गोल कौन सा सही नहीं है इसमें? चलिए जी, स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स. Start writing your answers. Okay, I've started getting answers. Okay, good one, good one. Please keep writing answers. Okay, this calls me for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. चलिए जी, सीधी सीधी बात है. ऑप्शन में आपको पहले एक्सप्लेनेशन बताता हूं. सो कार्डियक रिहैबिलिटेशन टीम वर्क्स फॉर फिजिकल एक्टिविटी, education and emotional support. The physical activity include range of motion exercises, diaphragmatic breathing, incentive spirometry exercises, ambulation in the room and hallway under the guidance of physical therapist, and review of stair climbing prior to the discharge. Education includes the review of home activity guidelines, walking guidelines, and signs and symptoms of the cardiac problem. एक चीज हमेशा याद रखना, इसमें जितनी भी चीजें होती है दैट इज अंडर स्ट्रिक्ट गाइडेंस ऑफ द फिजिकल थेरेपिस्ट, राइट? सो इन दिस केस ऑप्शन नंबर 2 अपने आप कट हो गया क्योंकि एजुकेशन हमको करनी है. काउंटरैक्टिंग द डिकंडीशनिंग एसोसिएटेड विद बेड लेवल हमको करना ही है क्योंकि थोड़ा थोड़ा वॉक करवा रहे हैं हम, राइट? अच्छा, हम लोग एक्सरसाइजेस भी करा रहे हैं, एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो एनीवेज वी आर एनहांसिंग द मैक्सिमल ऑक्सीजन कंजम्पशन. ओके, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. मतलब ये सारे गोल्स हैं, तो बचा क्या?
बचा ये, क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट एडीएल्स हम नहीं करा रहे हैं, हमने बार बार लिखा है अंडर दी गाइडेंस ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट, ठीक है ना। जितनी भी एक्टिविटीज हम करा रहे हैं दे आर अंडर strict guidance of either the family member or the physical therapist. Okay, so we are not allowing the patient to go for independent ADLs. In this case, option number 1 is correct. Although जो फर्स्ट फेज ऑफ कार्डियक रिहैबिलिटेशन होता है उसमें हमेशा वी प्रमोट ADLs, but they are under strict guidance of either the physical therapist or any family member or the caregiver. Okay, so independent physical activities activities of daily life are not promoted in phase 1, that is till day 5. phase 1 जो होता है वो पहले 10 दिन तक चलता है, ठीक है। चलिए, दिस ब्रिंग्स मी, तो चलो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर 1 लिखा, मेरे ख्याल से किसी ने नहीं लिखा है, ओके, ऑप्शन नंबर 1 किसी ने भी नहीं लिखा, तो this brings me to the last question of the last part of the RPSC paper solving जर्नी। चलिए, मैं कुछ और बात कहूं इससे पहले हम लास्ट क्वेश्चन सुनते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, फिर हम बात करेंगे। चलिए, सो द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, here we go. Using MET values for planning and exercise program are used in a cardiac exercise program, used in pulmonary exercise program, used for neurological cases, or used for orthopedic cases. चलिए, start writing. Easy question है, last question is quite easy. Expecting for your answers. Expecting for your answers. Good one. I have started receiving that. Keep writing your answers. Easy question है, हम फटाफट से जल्दी जल्दी आंसर कर सकते हैं इसे। चलिए, now I'll be starting with the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन दिया है, चूज किया है ऑप्शन नंबर 1, तो मैं बता देना चाहूंगा जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है, यू पीपल हैव आंसर्ड इट करेक्टली। MET का फुल फॉर्म होता है मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ टास्क, सो इट इज अ मार्कर ऑफ योर कार्डियक एंड्योरेंस। ओके, सो मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट और METs आर routinely employed as guide to exercise training and activity prescription and to categorize cardiorespiratory fitness. One metabolic equivalent, that is MET, is defined as the amount of oxygen consumed while sitting at rest and is equal to 3.5 ml oxygen per kg body weight per minute. Okay, so all those people who have answered option number 1, it is the correct answer. Chaliye ji, this brings us to the end of the RPSC previous year's paper solving. So it has been such a wonderful journey. Let me first close this before I start talking to you people. Chaliye ji. So thank you so much everybody for being with us for all these 4 days. लास्ट 3 days मेरे ख्याल से बहुत ही एक हैप्पीजर जर्नी रही है, बहुत ही स्पीड से दौड़ते रहे हैं हम इस चीज में, बट इवेंचुअली मैं बताऊं मुझे बहुत मजा आया इस चीज में। सच अ वंडरफुल जर्नी दिस हैज बीन, और I'm looking forward to various more of such activities in coming future with you people. So always stay there with us always. So it'll be a very amazing journey with you people. So thank you so much. I am signing off from here with our last segment of our RPSC paper solving today. Thank you so much. Stay tuned. Thank you so much, Dr. Sonam, and thank you so much all the participants who were constantly with us. I can see there are a lot of people. Reena Sharma, and I can see many more people. Manasvi. So we have one more name, that is Medini. Okay, hi. So you were there. That's a different name. Okay, we are having a lot of people.
Shirisha Gupta, she's also a student. Manroop, Geeta, she was there. Dr. Pankaj was there. Mukul was there. Manasvi was there. I took already her name. Dr. Nirvan, she was there. Dr. Jyoti. So there are a lot of names who were there with us. I'm sorry अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो. So you people have Dr. Hemant. Yeah, he was with us for all these days. So अगर किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो I'm really sorry. So thank you so much for being with us for all these days, for all these 4 days. I'm looking forward to have many more sessions like that. So thank you so much. I'll see you in the coming days. If you have any queries related to it, you can either email it to me, you can talk to me on WhatsApp, you can talk to me on Telegram, you can talk to me on any damn social media, Facebook, or you can even call me for that, right? So I'll always be available to answer you people. So thank you so much. I'll be signing off. Good night. Have your food and sleep well today. Okay, stay home, stay safe, and